Assalamu alaikum. How's everyone feeling? पता बड़ी देर कर दी. It was supposed to start at 6, अब 6:30 हो रहे हैं. तो I'll try to speed this up. Can everyone on Zoom hear me as well? Video clear है? Okay, perfect. So let's get started. मेरा नाम शेहरयार है. I am a software architect and technology consultant. I also run the Google developers community in Lahore. Software industry से I've been in the software industry for about 13 years now, with a strong focus on web and cloud. My focus over the years has mostly been real-time and distributed applications, but I've been slowly creeping into AI over the past year. A bit more about me, I also rank among the top 5 developers in Pakistan according to Stack Overflow, with 70,000 points. I've published multiple famous libraries, and my work has been featured in a couple of newsletters and online developer communities. तो फिर आज का सीन क्या है? Well, my goal for today is to give a light introduction about Google's Vertex AI, and some of the low-code generative AI features that it provides that we can use, and they're available for public use on Google Cloud right now. To that end, आज का agenda बहुत simple है. I'll start off with an intro to what Vertex AI is, and a high-level overview of all the services it offers. उसके बाद we'll talk about Google Cloud's Generative AI Studio and the Palm model that powers it. We'll dive a bit into what the different parameters mean and how to tune them. Finally, we'll see how we can use the API and SDK to integrate it with just about every application there is. And of course, I'll keep demoing throughout the presentation, so demo end पे नहीं होगा. And in the end, I'll stop with I'll share some learning resources, and I'll take questions. ठीक है? चलो. अच्छा, तो Vertex AI है क्या? So if you're familiar with Google Cloud Platform, तो आपको already idea होगा कि there are literally a bunch of different services. ख़त्म ही नहीं होती list अगर आप scroll करना शुरू करो. So Google has been focusing a bit more on the AI side of things recently, and if you watch the Google I/O keynote in May this year, तो उसके भी बड़े memes बन रहे थे AI, Android AI. तो उनका भी सारा focus ही अभी AI पे है, and they're making all of their tools public for public use right now. So Vertex AI within Google Cloud Platform is just a subset of services that are related to AI machine learning, and it mainly provides end-to-end tool suite to help with just about every stage of the ML ops pipeline. You can build, manage, and deploy models from scratch. It also has a growing library of pre-trained foundational models that you can use to get up and running fast. Vertex has low-code generative AI tooling available too, जिस पे आज हम focus करेंगे, and that basically allows you to start using it immediately before even setting up a model. And if you're a part of a large team that works on different aspects of data science, performance, machine learning, Vertex AI can be easily integrated with BigQuery, Dataproc, Spark, and a bunch of other tools as well. Okay. So this is just a non-exhaustive list of all services or products or sub features within Vertex AI. You have Model Garden, which is basically a library जहाँ पे आप जो है ना बने बनाए models को pre-trained models को आप use कर सकते हो, immediately import कर सकते हैं, you can start using them. This Generative AI Studio, इस पे आज की talk हमारी इस पे focus करेगी, तो I'll get back to this a bit later. फिर हमारे पास deep learning की VM images हैं, so it's basically just images to help you get quickly started with environments. मतलब आपको ML के साथ आप काम करना शुरू कर दो without worrying about setting up your own environments. AI workbench है, इस पर मैं थोड़ा सा बाद में जाऊँगा. Data labeling है, it's a service that helps you basically label data sets. Then they have containers, contained models या contained environments, इस पे आप quickly जो है ना अपना deep learning environment setup कर सकते हैं. You can start deploying your models. Feature store, ML Metadata, Vizier, bunch of different products. लेकिन हमारा focus आज जो है ना इन तीन पे ही होगा, mostly Generative AI Studio. ठीक है, तो
Generative AI Studio Vertex AI के अंदर ही एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, which is basically just a low code generative AI platform. मतलब आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा. With just a couple of lines you can get started immediately, but you can still play around with its parameters to tune it. Google uses yes, so Google has a bunch of different models pre-trained. You might have heard about Palm. अभी Palm का नया version आया है, Palm 2, which focuses on text and chat. Imagine है, which is text to image, sort of like DALL-E या Midjourney. Picture है, which is a bunch of different tools related to speech, like speech recognition, speech translation, speech to text, and Cody, which is code generation and completion in chat. चूँकि हमारा फोकस आज टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई पे है, तो we'll focus on Palm 2, which is Google's transformer based large language model. It was trained on 340 billion parameters with 3.9 trillion tokens, so it has a pretty large data set. So one of the things that I've heard from people is कि इसका जो parameters है ना, इन्होंने version 1 से कम किए हैं. Version 1 के अंदर इसके थे, I believe 540 या 550 billion parameters थे. So this basically just means कि उन्होंने अपने model को थोड़ा और efficient किया है. Data set का size increase हुआ है, but लेकिन इनके parameters decrease हुए हैं. So it's a bit more efficient and lighter than its predecessor. And this is the same ML model that's used by Google's Bard AI, which is like the chat GPT of Google. And a bunch of other variations also exist, such as MedPalm and SecPalm, which are used in the medical and security industries. The Palm 2 is available in 2 variations for public use at the moment. एक Bison इसकी variation है, Gecko एक variation है. Bison is like the standard version, which is more powerful. उसके पास ज़्यादा data set है, and it's I guess a good balance of cost. Cost की भी हम बात कर लेंगे. I think it's like 0.1 cent per 1,000 generated tokens, and Gecko is like the more affordable version of it. But of course it's less powerful. So अगर किसी को cost effective LLM solutions चाहिए to integrate within your app, you can use Gecko. But for standard services and in standard integrations, Bison is what's used more commonly. When we talk about its capabilities, Palm is multilingual. It was trained over 100 languages. So it understands idioms, poems, riddles. It has reasoning capabilities as well. उसके data set में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा scientific papers, mathematical knowledge और logical expressions काफ़ी कुछ include किया था. So it has led to improved capabilities in logic, math, and common sense reasoning. But of course AI है, तो you'll see some funny results occasionally as well. Finally, there's इसका coding capabilities भी हैं. Google used multiple very large public code bases to train Palm, जिसकी वजह से आपको जो है ना it can generate code and even understand code in both popular and specialized languages. अच्छा, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है, and I'll start with the first demo of our presentation. How can you get started and what the UI looks like within Google Cloud Platform. So let me just switch that here. So when you log into Google Cloud, this is what you'll see. इसमें ये एक standard dashboard and I've created a new project just for today. And if you go here, you'll actually, let me just zoom just a bit here. Better है? Okay. तो as you can see, ये Google की ना products की list कभी ख़त्म होती नहीं. There's a huge list, लेकिन इधर मैंने Vertex को जो है ना already pin किया हुआ है. So we'll just switch over to that. ठीक है. So you start off with your dashboard, जहाँ पे gives you an overview of all the or some of the features that you can use right now. इसमें सबसे पहले है Model Garden, and which is like I mentioned before, just a library of available pre-trained models जो कि आप अपनी ऐप में उसी वक्त यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो. Okay.
So yeah, so आप यहाँ पे देख सकते हैं palm for text and palm for chat available है. Then you have a bunch of other models as well. There's embeddings for text, chirp जो कि speech के लिए है, embeddings for image, and a bunch of other models. ठीक है, फिर उसके बाद Vertex AI के अंदर ही Workbench है, which is sort of like an compute की instance एक deploy हुई है जहाँ पे आप अपनी Jupyter की notebooks run कर सकते हो. So anyone familiar with Jupyter here? Okay. तो बस वही आप Google की compute instances के ऊपर एक Jupyter का एक environment available है, and you can create multiple Jupyter notebooks and you can prototype and start working on your models or experiments. फिर pipelines है, and then there's an entire section for Generative AI Studio. इसमें भी आप देख सकते हैं there's language and speech, and today we'll focus on the language part. And I can start with a new text prompt. तो अब यहाँ पे मेरे पास एक prompt है, ठीक है. तो as you can see there's a bunch of other things going on here, लेकिन इसको ना अभी हम एक basic से demo कर लेते हैं. So let's do something like अच्छा आज जैसे I was having a hard time coming up with a good title for my presentation, तो इसी को पूछ लेते हैं. Come up with अच्छा, let me run this and it should generate a response. ठीक है, तो it generated in markdown, तो उसने ना मुझे different head titles दे दिए. तो if you know ChatGPT तो basically वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो एक additional feature है which I really like, which ये है कि आप structured data इसको pass कर सकते हो, and then it तो आप structured data में it basically helps you build prompts. ठीक है, तो अगर आप prompting से familiar हो तो it helps you design prompts in an effective manner, और आप फिर उसको use करके क्या कहते हैं अपनी apps वगैरह में भी integrate कर सकते हो, but which we'll talk about it a bit later. तो let me think. अब इसके लिए हम क्या करें? कोई ऑफिस देखता है? Okay, so we can do something like that. तो let's ask it. पहले context set करते हैं हम इधर. Context set करते हैं कि हम हमारी जो discussion होगी QA in actually let's change it a bit. QA of pirates in the office style mockumentary. ठीक है, तो अब इसने कुछ एग्जांपल्स मांगे हैं. लेट्स इग्नोर दीज फॉर नाउ, और हम ना इसको एक क्वेश्चन देते हैं साथ. तो क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद ड्वाइट. ठीक है, तो लेट्स रन दिस. क्या होता है? अच्छा, अब उसने भी पूरी कहानी सुनाई है कि द सीन इट्स इनसाइड ऑफ अ पायरेट शिप. नरेटर बोलता है वेलकम टू द इनसाइड ऑफ पायरेट शिप. क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें अब अगर हम इसको एग्जांपल दें, इसको अच्छा अगर हम इसको एग्जांपल दें, इसको कहें कि हमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, या किस फॉर्मेट में हमें ना अपने इनपुट्स का रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको ना डिफरेंट एग्जांपल्स उस तरह दे सकते हैं. तो इसको इस तरह की मैं एग्जांपल दे देता हूँ. वेयर इज जेन, और इसको एक रिस्पॉन्स हम लिख देते हैं. तो स्टूपिड सा रिस्पॉन्स लिखते हैं. नहीं, थोड़ा सा ना पायरेट स्टाइल में हमने देना है उसको. तो एक्चुअली किस ब्रांच में गया था? स्टैनफोर्ड ब्रांच. ठीक है, नजर आ रहा है सबको? लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ. मेरा सस्ते से पायरेट स्टाइल में मैंने लिख दिया है. तो इसको हमने दोबारा सबमिट किया है, तो अब उसका रिस्पॉन्स भी इसी स्टाइल में आया है.
So he be trying to take over the ship, but I'll be damned if I let him. Silly, लेकिन चलो illustrates the example. अच्छा, so let me switch back to the presentation. So this was just a high-level overview of Generative AI Studio और Palm उसको वो backend पे कैसे use करा उसको. तो if you noticed before side पे एक bunch of different options उसने दी हुई थी. वो सारे parameters हैं जिनको आप use करके ना अपने मॉडल को या आप responses को ट्यून कर सकते हो कि आपको किस किस्म के responses चाहिए. तो some of the inputs or the parameters that you can pass to Generative AI Studio और Palm सबसे पहले तो ऑब्वियस है प्रॉम्प्ट कि आपके जो है ना इनपुट क्या है, ठीक है, कि आप क्या टेक्स्ट इनपुट उसको दे रहे हो टू जनरेट अ मॉडल रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडियो. देन देयर इज टोकन लिमिट विच बेसिकली मीन्स के मैक्सिमम लेंथ आउटपुट की क्या हो सकती है, बट इट इज़ नॉट मेजर्ड इन कैरेक्टर्स और वर्ड्स, इट्स मेजर्ड इन टोकन्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 कैरेक्टर्स. तो इफ़ यू सेट एन आउटपुट लिमिट ऑफ लेट्स से 100 टोकन्स, तो जो रिस्पॉन्स होगा ना इट वुड बी बिटवीन 60 to 80 वर्ड्स. फिर इसी तरह एक जो इम्पोर्टेंट इसमें एक पैरामीटर है वो है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द क्रिएटिविटी ऑफ द रिस्पॉन्स. ठीक है, इट्स अ वैल्यू, इट्स अ परसेंटेज वैल्यू बिटवीन 0 to 1. तो अगर आप टेम्परेचर 0 रखोगे ना तो आपके रिस्पॉन्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी. बेसिकली वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट होगा. ठीक है, तो लेकिन अगर आप जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करोगे ना आपके रिस्पॉन्सेज उतने ही थोड़े से रैंडम होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन टेम्परेचर अकेला पैरामीटर नहीं है जो कि रैंडमनेस को डिटरमिन करता है. देयर टू अदर पैरामीटर्स एंड वन ऑफ देम इज टॉप के. तो टॉप के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग टोकन सिलेक्शन एट ईच स्टेप. तो टोकन इज बेसिकली एवरी वर्ड और एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड जो कि रिटर्न होगा, जो कि आपका मॉडल रिटर्न करता है रिस्पॉन्स में. ठीक है, तो हर स्टेज पे ना वो टॉप के यूज़ करके डिटरमिन किया जाता है कि नेक्स्ट वर्ड्स क्या होंगे प्रोबेबल जिनमें से आपका रिस्पॉन्स रिटर्न होगा. तो इट यूजुअली स्टार्ट्स एट 1 एंड इट कैन बी एनी वैल्यू, लेकिन गूगल ने एक लिमिट लगाई है 40 की. ठीक है, आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं इसको अपना एक इलस्ट्रेशन से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा. तो बट वन थिंग टू नोट हियर इज कि द हायर के वैल्यू इट मीन्स कि आपका रिस्पॉन्सेज ज़्यादा रैंडम होंगे. Similarly to top K, there is top P. So it also modifies token selection at each step. लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना इट्स अ प्रोबेबिलिटी. तो इट रेंजेस बिटवीन फ्रॉम 0 to 100%, जिसको आप 0.0 से 1.0 में उसको पास करते हो. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे ना बड़ी मुश्किल लगती है एक्सप्लेन करने में, बट आई विल स्टिल ट्राई. सो इट बेसिकली ट्राइज टू सेट अ थ्रेशहोल्ड फॉर टोकन प्रोबेबिलिटी सम. टॉप हर टोकन के बाद ना काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि आगे क्या वर्ड्स आएंगे. फिर उनमें से जो है ना टॉप के से आप डिसाइड करते हो कि उनमें से जो टॉप 5 वैल्यूज़ पिक कर लो या टॉप 10 वैल्यूज़ पिक कर लो, उनमें से कोई वैल्यू शो करनी है. लेकिन उसमें लो क्वालिटी का इशू आ सकता है. तो जो टॉप पी है ना वो इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटीज़ सेट करने के लिए कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी सेट कर दूं कि जिन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी 60% तक हो आने की, सिर्फ वही आए, जो लो प्रोबेबिलिटी वर्ड्स हैं वो ना आए. ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ. लेकिन द ओनली थिंग यू नीड टू नो राइट नाउ इज हायर पी मींस मोर रैंडम. अच्छा, तो जैसे अब एग्जांपल देख लो. लेट्स से आपके LLM के पास एक ये स्टेटमेंट है, द पार्ट नियर माई हाउस हैज़. अब उसकी LLM की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अगला वर्ड फिगर आउट करना है कि अगला वर्ड क्या होगा. ठीक है, तो मॉडल जिस भी डेटा पे ट्रेन हुआ है वो रिटर्न करता है कि वो एक बड़ी सी लिस्ट रिटर्न कर देता है सारी पॉसिबल वैल्यूज़ की. ठीक है, अब उसके पास सारी लिस्ट आ गई, फ्लावर्स, ट्रीज, ग्रास और एंड पे लेक और बग्स. ठीक है, और उस लिस्ट में ना हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी भी होगी कि जो नेक्स्ट वर्ड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फ्लावर्स होने की 35% है, ट्रीज़ की प्रोबेबिलिटी 22% है, ग्रास की प्रोबेबिलिटी 17% है, एंड सो ऑन एंड ऑन. अब टॉप के करता क्या है कि अगर आप टॉप के सेट कर दो 1, ठीक है, तो वह हमेशा सिर्फ फ्लावर ही रिटर्न कर सकता है, फ्लावर के अलावा और कुछ नहीं रिटर्न कर सकता. लेकिन अगर आप कर दो 3, अगर टॉप के की वैल्यू आप सेट कर दो 3, तो वो फ्लावर्स, ट्रीज और ग्रास में से कोई एक वर्ड अगला रिटर्न करेगा. सही है, तो इसने पहली दफ़ा जो है ना आपकी पूरी लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया इन 3 वैल्यूज़ पे. टॉप के बाद अप्लाई होता है टॉप पी.
ठीक है। और टॉप पी पे आप करते हो कि अच्छा मुझे ना लो क्वालिटी या जिन वर्ड्स के बहुत लो चांसेस आने के ना वो मैंने रखने ही नहीं, सही है। तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी सेट कर दूँ 60% से जो है ना कम कम मतलब 60% तक जितने वर्ड्स आ सकते हैं ना वो आए। तो 0.35 प्लस 0.22 कितना लगता है? 57। तो ये आ जाने क्योंकि जब 0.17 ऐड होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा उस लिस्ट में, तो उसने उस लिस्ट को फर्दर शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो जब आपका रिस्पॉन्स होगा ना वो फ्लावर्स और ट्रीज में से कोई एक वर्ड रिटर्न करेगा अगला, ठीक है। तो इसलिए जब आप ए आई या एम एल खासतौर पे LLMs की ट्यूनिंग की बात करते हो, ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर हमेशा एंड पे अप्लाई होता है, सही है। टेम्परेचर वो एक फाइनल रैंडमनेस ऐड करता है। अब इसके बाद टेम्परेचर अप्लाई होगा और वो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वैल्यू फ्लावर्स या ट्रीज में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इधर तक क्लियर था? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एक और डेमो करते हैं। तो लेट्स गो बैक जो हमने इधर खोला होता, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर कर दें 0, ठीक है, और अब इसको सबमिट करें तो उसने ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अब मैं इसको दोबारा सबमिट करूँगा तो वो एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स ही रिटर्न करेगा क्योंकि हमने उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो हर बारी जो है ना, हर बारी सबमिट करने पे वो एक नया रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपने रैंडमनेस और बढ़ानी है तो जो है ना टॉप के तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, आप टॉप पी भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको भी बिल्कुल कम कर दूंगा तो आपके जो है ना रिस्पॉन्सेज ज़्यादा ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होते जाएंगे और लेस रैंडम होते जाएंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस जितना आप ज़्यादा हाई वैल्यूज रखोगे उसकी वजह से आपका रिस्पॉन्सेज की कैलकुलेशन भी उतनी स्लो होगी, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्विच बैक टू स्लाइड्स। अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन अब इसको अपनी ऐप में हम कैसे इंटीग्रेट करें। वेल अभी आपने जितने भी ऑप्शंस देखे, जितने भी आपने फीचर्स देखे हैं वो सारे एक बहुत सिंपल API में अवेलेबल हैं। यू कैन यूज़ द फुल पावर ऑफ Palm 2 विद इन योर ओन ऐप, सारी LLM कैपेबिलिटीज़ उसमें अवेलेबल हैं और बहुत ही सिंपल API है। उसके अलावा एक पाइथन SDK भी है गूगल का ऑफिशियल, और एक अनऑफिशियल एलिक्सर का SDK भी मेरी टीम डेवलप कर रही है। तो अगर हम API यूजेस देखें, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल कर्ल कमांड। आपने सिर्फ गूगल क्लाउड का जो भी क्लाइंट है उसे एक ऑथ टोकन ले लिया है एंड यू पास इन जस्ट अ जेसन रिक्वेस्ट। ठीक है, आपने इंस्टेंस पास कर दी जिसमें एक कंटेंट है कि मतलब कुछ भी आप डाल दो, एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस फॉरेस्ट, और ये बेसिकली समराइजेशन का उसको मैंने टास्क दिया कि, या एक्सप्लेनेशन का टास्क दिया कि ये शॉर्ट स्टोरी है, मुझे इसको एक्सप्लेन करो एंड आई कैन पास इन ऑल ऑफ द पैरामीटर्स थ्रू हियर। बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ वेरी easy to use simple Python SDK. You just import Vertex AI. उसको initialize करना है, you give it a prompt, pass in, you call the model.predict function and pass in the parameters as additional arguments and it will return a response with the text. तो I know there is not a lot of time, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से ना एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि how you can actually use these, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है ना कमांड्स के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जो गूगल का जनरेटिव AI स्टूडियो है, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स द कोड फॉर यू एंड यू कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट इन योर कोड। तो लेट्स डू दैट रियल क्विक। अच्छा, तो हम इधर थे एंड लेट्स से आई वांट टू इंटीग्रेट, ये मैंने एक टेम्पलेट बना ली, जेनेरिक टेम्पलेट बना ली, उसको मैंने अपनी ऐप में इंटीग्रेट करना है। आई कैन जस्ट गो हेयर, क्लिक ऑन व्यू कोड, और वो पाइथन में भी उसने मुझे कोड जनरेट कर दिया है विच आई कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इनटू माय ऐप। एंड वो कर्ल का भी एक उसने कमांड बना दिया विच यू कैन कन्वर्ट टू योर ओन, जो भी आप API रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करें लाइब्रेरी, ठीक है। तो लेट मी सी इफ दिस works in my environment right now. So I have my terminal open here, मैंने उसको कॉपी किया है and I'll just paste it here. Excuse me. अच्छा, and let me see if this works.
सही है. तो रिटर्न रिस्पॉन्स कंटेंट में आ गया. देन देयर सम एट्रीब्यूट्स इसमें जो है ना उसने बताया कि कैटेगरीज में इंसर्ट पब्लिक सेफ्टी व्हाटएवर एंड कुछ उसने स्कोर्स वगैरह एडिशनल मेटा डेटा रिटर्न की है. Similarly, if I want to do the same thing in with Python, तो मैंने इधर ऑलरेडी एक वर्कबेंच के अंदर मैंने एक नोटबुक ऑलरेडी बनाई हुई है. सो आई जस्ट स्विच टू दैट. इफ वी स्टार्ट विद इसमें बस वही start this. Taking its sweet time. अच्छा. So you just need to download and install the library. यहाँ पे आपने Vertex AI की जो लाइब्रेरी है उससे आपने इंपोर्ट करना. I'm using the preview version but you can use the regular. उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं and you can pass it in prompts और वो जो है ना responses देगा. So let me change something. इसको मैं कहूँ hello how are you and if I run this again तो उसने ना response भेज दिया है. तो since there is not a lot of time, I'll just quickly demo. इसकी एक और capability है. अभी हमने ना plain text देखा है, but similar to chat GPT हम इसको ना एक chat के context में भी चीज़ों को run कर सकते हैं. सही है. It's the same library. उसमें बस आपने पहले जहाँ पे text generation model import किया था वहाँ पे आपने chat model import कर दिया है. You import it, initialize a chat instance और उसमें जो है ना then you can call उसको कोई मैसेज भेज सकते हो कि टेल मी समथिंग अबाउट द पाइथन लैंग्वेज और उसका रिस्पॉन्स भेजेगा. लेकिन इसकी जो एडिशनल एक फीचर है ना यू कैन ऑल्सो डू कॉन्टेक्चुअल चैट. ठीक है. तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो. यू कैन स्टार्ट अ न्यू चैट इंस्टेंस और उस चैट इंस्टेंस से आप जो है ना अगले उसको कोई मैसेज वगैरह भेजोगे या उसको आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि माई नेम इज़ शहरयार, यू आर माई पर्सनल असिस्टेंट, My favorite movies are Pulp Fiction and Silence of the Lambs. And so मैंने फिर different prompts के ना एक output examples दे दिए कि who do you work for and what do I like. Given these examples, अगर मैं तुमसे एक question पूछूं are my favorite movies based on a book series and run this, तो वो जो है ना उसके ऊपर existing अपनी knowledge use करके response करेगा but in the same format या उस context में जो कि मैंने उसके लिए set कर दिया. ठीक है. तो उसने रिस्पॉन्स किया पल्प फिक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन अ बुक सीरीज बट साइलेंस ऑफ द लैम्स इज. ठीक है. एंड टेम्परेचर इसमें 0.3. लेट मी ट्राई विद अ हायर वैल्यू लाइक 0.8 एंड रन दिस अगेन. ठीक है. तो अब उसने टेम्परेचर मैंने चेंज किया इंक्रीज़ किया है तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा क्रिएटिव है. उसने ज़्यादा क्लैरिटी ऐड की है. उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है कि पल्प फिक्शन इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ बुक सीरीज बट साइलेंस ऑफ द लैम्स इज़ बेस्ड ऑन द बुक सीरीज रेड ड्रैगन बाय थॉमस हैरिस. ठीक है. And I guess that's pretty much it. मैं एक final चीज़ उस पर switch कर लूँ. Display this. Okay. So that's pretty much it from my end. But before I take any questions, just want to share these links. You can find these slides on this URL. This अभी upload नहीं हुई, but in a couple of hours, this link would be live and you can download these slides. You can find more of my talks at this URL. Vertex AI की official talks यहाँ पे मिल जाएंगी. Part 2 की कुछ interesting concept और थोड़ी background knowledge है. It's very interesting. It's a very interesting read. You can find this here. लेकिन इसमें जो सबसे interesting link है ना वो ये final code lab है. So this was authorized by Google. आप इस पे जाओगे तो you'll get access to one of Google's code lab for free. जिसमें it's like 4.5 hours long. आप इसको 3 बार में कर सकते हो. And it gives you a complete overview of all the Vertex AI capabilities, focusing only on generative AI. So there are a bunch of different examples, or it's free. वो आप इस पे जाओगे तो it will create a new account for you, and you can log into GCP with those details and play around for free without any expenses. Yes, any questions? मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ. Any questions on Zoom? Side services are they like paid? Yes, they paid. But
डिपेंड, मतलब हर किसी की ना प्राइसिंग मॉडल डिफरेंट है, कॉस्टिंग डिफरेंट है। वर्टेक्स एआई की जेनरेटिव एआई फीचर्स हैं, दे जनरली वेरी चीप. I don't remember the exact cost of ChatGPT. It's been a while since I last used OpenAI's API. But I remember this being cheaper. इसमें जो है ना, अगर आप बाइसन मॉडल यूज़ करते हो, विच इज़ देयर मोर एडवांस्ड मॉडल, तो इट्स 0.1 cent for 1,000 tokens or 1,000 words generated. And if you use the chat features, I think it's like 0.05 cents for 1,000 words generated by chat. So very cheap. Can you talk about its application? Like अभी ये एक available है कि API है, तो इसकी applications कहाँ पे पड़ सकते हैं? Like the ChatGPT. I'm sorry, just one question at a time. पहले आप. I was saying कि जो इसकी application है, वो कहाँ पे इसको apply किया जा सकता है? इस API को where we can like actually apply. So any place where you can add a little bit of AI magic, आप जहाँ पे ऐड करना चाहते हो and you have some data set available, आप उसको connect कर दो और अपने data set expose कर दो. सही है. Some of the things that I was not able to cover today is कि इसमें 2-3 features ऐसे हैं कि if you have unstructured data, पहली बात, अगर आपके फॉर एग्जांपल आपकी एक सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, और आप उसकी सारी डेटा यूज़ करके ना एक नया AI मॉडल ट्रेन करना चाहते हो, you can simply point Vertex AI to your website. So yeah, that's the simplest, that's the easiest thing you can do. So for example, you're the owner of the Verge. So yeah, आपके पास सालों का content पड़ा हुआ है and now you want to train an AI based on all that data जिससे आप question answer कर सको and it can guide you कि अच्छा मैंने जो फ़ोन लेना सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा होगा. सही है. तो you just point it to your website, वो उसको index कर लेगा पूरा and the model would be trained and वो उसको use करके जो है ना एक आपके पास पूरा एक अपना चैट जीपीटी फोकस जस्ट ऑन वो हो जाएगा. दैट्स द इजीएस्ट वे. लेकिन लेट्स से अगर आप कोई बहुत यूनिक एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे ये लेट्स से यू हैव अ लॉट ऑफ मेडिकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और अब आप जो है ना उससे थोड़ी सी उसमें इंटेलिजेंस डालना चाह रहे हो, उसको थोड़ा सा ऑटोमेट भी करना चाह रहे हो, बट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपोज दैट डेटा सेट टू वन ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल ऑन वर्टेक्स एआई, और उसको आप फिर यूज़ करके ना मतलब हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट मेडपाम इज. ठीक है. पाम की एक वेरिएशन है मेडपाम विच इज़ यूज्ड बाय अ सेलेक्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स इन द यूएस, जो कि यूज़ करके जो है ना डायग्नोसिस वगैरह में हेल्प करते हैं. देन दे इसका फिर एक वेरिएशन है सेकपाम की, जो कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में यूज़ होता है. ठीक है. तो डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस. सही है. लोग हर चीज़ बना रहे हैं. सही है. And the interesting thing is most of the people working on AI and ML models right now, जिनके पूरे startups हैं, उनको उनके core concepts की understanding नहीं है. And that's fine, that's absolutely fine. ठीक है. आपने कहीं से start करना है, तो वो हर चीज़ में थोड़ी सी intelligence, थोड़ी सी automation डाली जा रही है using existing APIs and tools and services, which decreases the barrier for entry, makes it easier for more people to join. It depends on whatever you want to create. Does that answer your question? Yeah, so I know there was another question on Zoom. जो अभी आपने बताया that is basically similarity search or looking up through the already present data. But अगर हम इसको fine tune करना चाहें to a particular application or to a particular particular output generate करने के लिए, तो उसमें इसकी leverage है या नहीं है? I'm sorry, noise. Unclear. I couldn't understand your question. Did anyone else understand the question and can maybe they explain it to me? अली भाई रिपीट कर दें. जो अभी आपने एक्सप्लेन किया कि मेडफार्म है और यू कैन जस्ट पॉइंट वर्टेक्स टू पर्टिकुलर वेबसाइट और वो आपके उसके ऊपर क्यूएनए कर सकते हैं, तो दैट इज ऑन द इंजेस्टेड डेटा, और वो इंजेस्टेड डेटा के ऊपर आपकी सिमिलैरिटी सर्च बेस्ड वो आपको क्यूएनए कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? बट व्हाट इफ वी वांट टू फाइन ट्यून अ मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ आउटपुट, जैसा हमें पता है कि अभी हम इसको That's a very good question. अभी generative AI studio का मकसद ये है कि for people who are absolutely not familiar with AI and ML models and they immediately want to get started, वो उनके लिए है. So yeah, but there are a lot more advanced products and services available on Vertex AI, जहाँ के ऊपर आप अपने custom models भी बना सकते हो और आप बने models से को foundation के तौर पे use करके उनको ज़्यादा fine tune वगैरह भी कर सकते हो.
तो इस केस में हमारे पास सिर्फ आई बिलीव 4 या 5 पैरामीटर्स थे जिन्होंने हमें एक्सपोज किए थे, बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली कस्टम। उन्होंने बनी बनाई चीज़ है जिसको हम यूज़ करके अपने लिए इस्तेमाल करें टू मेक इट ईजियर फॉर अस। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, so just to rephrase, exist करता है वो वाला path जहाँ पे आप इसको fine tune कर सकते हैं, but you Yes, don't touch it yes. in this presentation. Yes. Any other questions? इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल उर्दू या अरबिक? उर्दू का मुझे ऑनेस्टली कंफर्म नहीं पता। आई नो इट वाज ट्रेन्ड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अरबिक वाज इंक्लूडेड, बट मल्टीलिंगुअल सपोर्ट टू माय नॉलेज इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज जस्ट येट। वो अभी उसका एक आप इसका एक वेट लिस्ट है जिस पे आप अप्लाई करते हो और उसमें आपको ना ये एडवांस फीचर्स तब मिलते हैं, तो इट वुड बी अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज सून, बट इट मल्टीलिंगुअल सपोर्ट अभी पब्लिक नहीं है। You need to get on that wait list और आपको अप्रूवल मिलना पड़ेगा पहले। Any other questions? The package you were talking about, Vertex AI, does that store the context of the command we send? Like, if I call that package, call that command with our command, any command, does it store the previous command too, or every time you have to give a new exact clear word store? It's a good question. तो इसमें ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जब आप इसको जब भी कॉल करते हो तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं स्टोर करता। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ना एक इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन दिस आंसर इज़ ओनली हाफ ट्रू, क्योंकि वर्टेक्स के ना आगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सब सर्विसेज हैं। वो सारी सर्विसेज एक तरीके से काम नहीं करती, सबका ना एपीआई कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट रिटेन करता है, कुछ के अंदर आपको एक नई इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं स्टार्ट चैट से पहले एक चैट की नई इंस्टेंस बनाऊँ और उसको एक क्वेश्चन दूँ फिर अगला क्वेश्चन दूँ, तो उस इंस्टेंस में जितने क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्टेक्सचुअल होंगे, तो उस पर कॉन्टेक्स्ट रखेगा। Any other questions? I think अच्छा, तो फिर हम wrap up कर सकते हैं। This is my website, and if you want to reach out to me, you can email me at hi@sheharyar.io, and you can find me just about everywhere at this handle at Sheharyar.